Good morning. I'm so glad to see all of you. This is Ramesh Yadav, adjunct professor at BIT Sindri and Jharkhand University of Technology. This morning, I'm going to talk about identifying opportunities, those 5 C's, what we have. But before I go into the identifying opportunities, I would like to share with the question which the students have asked. Students keep on asking that how do I prepare to get the seed funding for my idea? So first 2 slides I have for the seed funding for the students, and then after that we'll start the identifying opportunities, 5C. Good morning again. And this course is dedicated to Mr. Vinod Rao, who was our mentor, our professor. He was a lecturer in this also. And so thank you, Vinod. Thank you so much. We are going to miss you. The course faculty is Professor Suresh Roy, who is a serial entrepreneur, and we have Professor Raj Jaswa, who is the professor of entrepreneurship at IIT Bombay, Gandhinagar, and of course our Professor Dr. Prakash Kumar, head of the Department of Production and Industrial Engineering, BIT Sindri. He is the one actually heartbeat of the program. He's the one who is supporting it from the day one since we started this program in 2017. And my name is Ramesh Yadav. We will have invited guest entrepreneur speakers. And also, I really want to thank Ria Arora of Babson College, Boston, and Rena Arora of Harker School for all the visuals used in this presentation. So the question which student asks, how will I get funds to prove my idea, prove my hypothesis? So what answer should we give? What you will give to the students if your student asks you that question? So how will I get funds to prove my ideas, my hypothesis? Well, you have an idea. Very good. So do a research using AI like ChatGPT, Gemini, whatever you want to use about your idea. Do some research there and find out about that idea. Find out where it is being used, if at all. And once you have done that, and then you find out whose problem your idea will solve. So, in other words, you will find an unmet need, and then you will find out who has this unmet need. So, unmet need you have matched with the customer, and once you find that unmet need and who has it, you also find out what unmet need is addressing your solution, whose problem your solution is actually addressing. And you have gone out to other customers or other individuals or other organizations which have the similar problem. So now you have a segment, you have a customer segment. So you need to do next is you find out who the competitors are. You have done your research and you know who the competitors are. And you find out what is your advantage, why your idea is better, what does it implement, how does it solve the problem. Is it solving it faster? It is solving so that the cost is less, or is it solving the so the assembly is easier? So what are the competitors and what advantage you have?
Then you complete the timeline. You complete the timeline to complete your prototype. What it is, what will be the timeline, how much it is going to take, what is the length of the period to prove your hypothesis, and you complete that trial, that complete that timeline for the prototype. Now you have the timeline, and you have the timeline defined. And so now what you do is you identify the resources required, including funds. What resources you require to complete, to identify to prove your hypothesis, what resources you require. And now you are in school, and I'm sure on the notice board you have seen all these posted notes which says that there is a ideation competition in the area, whether it's in your school, whether it's a school which is next to you, or whether it is the at the university itself, or in the state at different areas. So find that out what's happening, and your professor, a professor of entrepreneurship, he or she will be able to help you out. So keep track of all the idea presentation event and submit your idea. Participate in the idea participation event across the state to win and to get seed funding and to test your hypothesis. So what this has done is, more you participate, more you are developing your skill of telling an excellent story. You become a good storyteller by the time you've gone through this exercise. And they will understand, the listener, the audience will understand what you are doing. So your message, what you have given is, this is the idea, this is the unmet need, the customers, you have identified the customer, these are these customer and the customer segment, and then you have identified which market segment that is, who is the competition, and why you believe, what are the advantage which you have as a as the entrepreneur. And then also you have the timeline, you have the resources required to do it, you have the how much money you need, and now you are ready. So these are the things you got to do. Entrepreneur, you got to do this and do it over and over and over again. Thank you. Thank you. Go and talk to your professor, your entrepreneurship professor in the class, and they will absolutely help you out on this. So now, how do identifying the opportunities? How do we identify the opportunities? There are 5 C's. One is the circumstances, that means the परिस्थिति, कौन सी परिस्थिति है? What are the circumstances? Context, किस संदर्भ में? And we'll go in more detail about it. Constraint, क्या बाधाएं हैं और क्या सीमाएं हैं? क्यों नहीं वो कर पा रहे हैं? And then compensating behavior. काम तो करना है और वो करते रहते हैं. So how do they work? Maybe they are putting more money in it. So the cost is going high. And then the last C, which is criteria. How do you measure? How do you know it is doing good? So how it is doing good? So you have to have a criteria where say, okay, just like you prepare in your exam, your period, that is the criteria that what kind of marks you get, right? Those are the kind of things comes into the criteria. So you must have the criteria कि सक्सेस किस समय आप कहेंगे कि ये सक्सेस मिल गई है. तो 5 C's आर सर्कमस्टेंस, परिस्थिति, कॉन्टेक्स्ट, कौन सा किस संदर्भ में है, कंस्ट्रेंट,
बाधाएं कौन सी है, सीमाएं कौन सी है, व्हाट आर द लिमिट्स, कंपनसेटिंग बिहेवियर। आप अभी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन ये क्षतिपूर्ति व्यवहार के कारण, सो यू आर स्पेंडिंग मोर मनी इनटू दैट। एंड लास्टली क्राइटेरिया, मापदंड, जो कि आप मेजरमेंट क्राइटेरिया मैट्रिक्स आप बना रहे हैं। हाउ डू यू नो दैट यू हैव सक्सीडेड? सो सर्कमस्टांसेस, दिस परिस्थितियां। सो लुक एट कि कस्टमर की प्रॉब्लम क्या है, ग्राहक किस विशिष्ट समस्या के बारे में सबसे अधिक चिंतित है। अत्यंत गंभीर समस्या, ग्राहक की समस्या अत्यंत गंभीर है, कौन सी वो गंभीर समस्या है? यू हैव टू फाइंड दैट आउट। एंड देन हाउ डज कस्टमर असेस द प्रॉब्लम? कस्टमर क्या समझे, क्या प्रॉब्लम है? क्या ये प्रोसेस की प्रॉब्लम है? क्या ये इक्विपमेंट की प्रॉब्लम है? क्या ये एफिशिएंसी की प्रॉब्लम है? क्या ये खर्च बहुत ज्यादा दाम इसमें है, वो है? या आप यू वांट टू इंक्रीज द प्रॉफिट? तो कौन सा आपकी जो व्हाट डज कस्टमर वांट टू डू? यू गॉट टू लिसन टू द कस्टमर। ग्राहक समस्या का आकलन कैसे करता है? समस्या क्या है? प्रोसेस, इक्विपमेंट, या प्रक्रिया, उपकरण, दक्षता। दक्षता इज हाउ हाउ वेल यू कैन डू, हाउ एफिशिएंट यू आर। लागत, how much is going to cost? Are you going to increase? Do you want, is customer wanting to increase his profitability? And then the next one is customer future में क्या करना चाहता है? What does the customer wants to do in future? भविष्य में ग्राहक क्या करना चाहता है, उसका गोल क्या है भविष्य में? वी गॉट टू नो दैट। और इसको हम तभी जानेंगे व्हेन वी लिसन टू द कस्टमर वॉइस। और जब कस्टमर बात कर रहा है, हम उसको, कस्टमर को डिस्टर्ब ना करें, जस्ट सुने ध्यान से। डोंट गिव योर सोल्यूशन, डोंट, बिकॉज यू आर देयर टू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम क्या है कस्टमर की। अंडरस्टैंड कस्टमर्स प्रॉब्लम, ग्राहक की आवाज सुने, उसको अपना सॉल्यूशन बेचे नहीं। अभी यू आर टू अर्ली टू डू दैट, क्योंकि अभी तो आपने समझा भी नहीं है कि ग्राहक क्या चाहता है। हाँ, आपने ये समझा है ग्राहक के साथ प्रॉब्लम है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम क्या है? प्रक्रिया प्रॉब्लम है, उपकरण प्रॉब्लम है, दक्षता है, लागत है, या वो लाभ में वृद्धि करना चाहता है? क्या एक प्रॉब्लम है या मल्टीपल प्रॉब्लम है? तो ये बातें सुनना बहुत जरूरी है। और फ्यूचर में एंड रिजल्ट, आफ्टर यू प्रोवाइड हिम ए सॉल्यूशन, व्हाट विल दैट सॉल्यूशन डू? तो भविष्य में ग्राहक क्या करना चाहता है? तो इसको मेजरमेंट करना बहुत जरूरी है। सो यू मस्ट क्रिएट अ मेजरमेंट मैट्रिक्स। तो दो चीजें हैं, एक तो कस्टमर जो जॉब करना चाहता है, जो भी जॉब है, जो भी इंप्रूवमेंट करना चाहता है, एक तो जॉब, और दूसरे एक्सिस पर है कि सरकमस्टांसेस, परिस्थितियां क्या है। सो इफ you draw this, the way this chart has been is shown. On the x-axis, you draw the jobs. On y-axis, you draw the circumstances. क्या काम करना है एक्स एक्सिस पे, क्या परिस्थिति है वो वाई एक्सिस पर। एंड व्हेन यू राइट दैट, कस्टमर विल बी एबल टू विजुअलाइज, कस्टमर समझ सकेगा, ओ, ये जो हमारे झारखंड यूनिवर्सिटी के जो एंटरप्रेन्योरशिप वाले स्टूडेंट है, ये समझते हैं मेरी प्रॉब्लम। दैट्स द मैसेज यू विल गिव आउट टू हिम इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, यू एक्सप्लेन दैट बैक टू कस्टमर। So create a simple job circumstance matrix that has primary jobs to do be done on one axis, that is x-axis, and common circumstances on the other axis, that is y-axis. मेक इट सिंपल, कस्टमर के लिए एकदम आसान बना दीजिए, ताकि
he can visualize, customer can visualize, एंड सो कि आपका जो इनोवेशन है वो कहाँ पे किस तरह आपको किस तरह हेल्प करेगा कस्टमर को। सो एक साधारण कार्य परिस्थिति मैट्रिक्स बनाइए जिसमें एक तरफ प्राथमिक किए जाने वाले कार्य, ये जॉब्स, राइट, जॉब्स है विच इज द एक्स एक्सेस, और दूसरी तरफ सामान्य परिस्थितियां, सर्कमस्टांसेस, वो है उसे और इसे ग्राहक के लिए समझने में सरल रखें, आसान रखें, ताकि ग्राहक समझ जाए आसानी से। तभी तो, क्योंकि आपने काम किया है, यू आर डूइंग द इनोवेशन, then customer will know, oh, this is the complex issue, and then you can say at the future, when you've understood everything, then you can say, you can tell the customer what is your solution, but you're not there yet. So ग्राहक की आवाज सुने, बेचे नहीं अभी तक, डोंट सेल द सॉल्यूशन राइट नाउ, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है, यू स्टिल हैव अ पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन। आप उस कहानी की जो बात है, वो कहानी शुरू शुरू की कहानी आपने सुने, अभी तो आपने मिडल और अंत देखना बाकी है। तो ग्राहक की आवाज सुने, उनको बेचे नहीं, आप वहां ग्राहक की समस्या को समझने के लिए, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ग्राहक की समस्या क्या है, फिर कौन सा संदर्भ है, कौन सा कॉन्टेक्स्ट है, कि कस्टमर पहले क्या करता था, व्हाट कस्टमर डिड इन द पास्ट टू एड्रेस द चैलेंज। ये जो चुनौतियां थी, उसका सामना करने के लिए ग्राहक ने अतीत में क्या किया, कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था वो, और फिर कस्टमर भविष्य में क्या करना चाहता है, कहां था और कहां जाना चाहता है, and when customer faces the problem, how they solve it। और जब कस्टमर के पास प्रॉब्लम आती है तो उसका समाधान वो कैसे करते हैं। सो एक चीज ध्यान देना बहुत जरूरी है कि जब आप ये डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो स्मॉल सैंपल इज मच मोर वैल्यूएबल देन द लार्जर सैंपल फ्रॉम अ बिगर ग्रुप, बिकॉज स्मॉलर ग्रुप में आपको सब डेटा, आपको स्मॉलर ग्रुप में स्मॉल डेटा रहेगा, बट यू हैव दैट स्मॉल ग्रुप इज वेरी डाइवर्सिफाइड ग्रुप। Excuse me, small group is diversified group, but still it is limited, it is small, so the data which is there for you to process, it's still limited, and you can kind of get a result from there, and then तो बड़े समूह के बड़े सैंपल की तुलना में छोटा सैंपल कहीं अधिक के मूल्यवान है। सो ग्राहक की आवाज सुने, क्योंकि स्टिल यू आर कलेक्टिंग द डेटा, स्टिल यू आर कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम कस्टमर, की कस्टमर क्या चाह रहा है, अभी यू आर नॉट रेडी टू सेल इट। आप वहां ग्राहक की समस्या को समझने के लिए, अभी आप वहां पर समझने के लिए हैं आप कस्टमर के पास। सो कंस्ट्रेन कंस्ट्रेन आइडेंटिफाई द बैरियर, बाधाओं की पहचान, कस्टमर की बाधाओं की पहचान कीजिए। कस्टमर क्या प्रॉब्लम है, कस्टमर को, तो व्हाट आर द बैरियर्स, कहां पर हम पा रहा है, और क्या ये जो आप, इज इट कॉम्प्लेक्स टू यूज, क्या इसका जो सॉल्यूशन क्या है, जो जो प्रयोग कर रहे हैं, इज इट डिफिकल्ट टू यूज फॉर द कस्टमर, जो भी प्रोडक्ट है, इज इट वेरी डिफिकल्ट टू यूज फॉर द कस्टमर, डज द यूजर हैव टू चेंज अ बिहेवियर, जैसे सामान कोई भी
कोई भी काम करते आ रहे, एक एक प्रणाली से, एक सेट है प्रणाली, और उसी से काम करते आ रहे हैं। एंड नाउ अब उनको नया प्रोडक्ट मिला है, दे हैव टू डू समथिंग डिफरेंट। तो क्या कस्टमर के व्यवहार में बदलाव करने की आवश्यकता है? और इज देयर अ स्पेस और पावर लिमिटेशन? क्या आपकी पावर लिमिटेशन है, जगह की लिमिट है, या जो जो पावर चाहिए, जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर वाटर चाहिए, क्या उसकी कमी है? सो ये सब चीजें ध्यान देना जरूरी है। दिस इज द डेटा यू आर कलेक्टिंग वन आफ्टर अनदर। ऑल ऑफ दिस डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट एज्यूम एनीथिंग, यू हैव टू आस्क। सो ग्राहक की आवाज सुने, बेचे नहीं, बिकॉज यू आर नॉट रेड देयर, यू आर देयर टू फाइंड आउट द कस्टमर नीड। That's what their customer problem you are trying to identify there. So आप वहां ग्राहक की समस्या को समझने के लिए, और बाधाएं, क्या कॉस्ट उसकी हाई है, क्या कस्टमर के लिए लागत बहुत अधिक है? इज द प्रोसेस एक्वायरिंग स्पेशल स्किल्स? क्या जो प्रोसेस जो बना रहे हैं, जो असेंबल कर रहे हैं या उसको टेस्ट कर रहे हैं, क्या उस प्रक्रिया के लिए विशेष कौशल की आवश्यकता है? ये ध्यान देना जरूरी है। एंड देन it is most critical to understand why customer doesn't consume. बहुत सी चीजें हैं कि सामान रखा हुआ है एंड कस्टमर कैनॉट कंज्यूम इट। क्यों नहीं कंज्यूम कर रहा है वो कस्टमर? ऑलरेडी कस्टमर हैड स्पेंड मनी इन दैट मटेरियल, ही इज नॉट एबल टू यूज इट। कस्टमर ने वो टेस्ट इक्विपमेंट खरीदा है, बट ही इज नॉट एबल टू यूज इट। कस्टमर ने टूल बनाया है असेंबली के लिए, बट ही कैनॉट यूज इट। तो क्यों वो नहीं यूज कर पाता है? यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। सो ग्राहक की आवाज सुने, बेचे नहीं, क्योंकि आप वहां ग्राहक की समस्या को समझने के लिए। सो कंपनसेटिंग बिहेवियर, क्षतिपूर्ति व्यवहार। तो कस्टमर के पास अभी है कि ही हैज अ प्रॉब्लम, और उसको प्रॉब्लम को फिक्स कर रहा है। सो उसको फिक्स कैसे कर रहा है? क्या कस्टमर उसमें और पैसा लगा रहा है? क्या उसमें और मटेरियल लगा रहा है, कोई डिफरेंट पार्ट लगा रहा है असेंबली में? तो कोई तो कॉस्ट बढ़ जाएगा ना उसका, राइट? इफ यू ऐड एनी पार्ट टू द असेंबली, द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल विल गो हाई, इट विल इंक्रीज। तो देन यू लुक एट, इट इज इजियर टू शिफ्ट स्पेंडिंग। अब कस्टमर के पास बजट है, राइट? बजट, बजट दे रखा है कि ये इस प्रोजेक्ट के लिए इतना बजट है, इस प्रोजेक्ट के लिए इतना बजट है, और थर्ड प्रोजेक्ट के लिए इतना बजट है। और थर्ड प्रोजेक्ट अभी तक शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि आप अभी पहले प्रोजेक्ट में हैं। तो बड़ी आसानी से मैनेजर कहता है कि थर्ड प्रोजेक्ट का जो बजट है, उसको पहले वाले में आप यूज कर लीजिए। शिफ्ट स्पेंडिंग, बट दैट इज नॉट राइट। क्योंकि अगर आप वहां से पैसा यहां लगा रहे हैं, वो थर्ड प्रोजेक्ट का जब टाइम आएगा, दैट इज गोइंग टू सफर। लेकिन क्योंकि पैसा ट्रांसफर करना आसान है एक जगह से दूसरी जगह, बिकॉज नोबडी इज गोइंग टू आस्क अ क्वेश्चन, बिकॉज अप्रूवल है ऑलरेडी। सो सो इसीलिए ये ध्यान देना जरूरी है। स्पेंडिंग मोर टाइम बाई फॉलोइंग कंपनसेटिंग बिहेवियर। और क्या हो रहा है कि आप कंपनसेटिंग बिहेवियर से कर रहे हैं, तो आप और ज्यादा समय लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसको फिक्स करने के लिए आपने इक्विपमेंट में और कुछ एडिशनल पार्ट लगाया है, एडिशनल असेंबली उसमें की है। सो इट्स गोइंग टू टेक टाइम, एंड दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर अ गेन टू कस्टमर। देखिए, अब आप समझ रहे हैं कि ओ नाउ यू हैव लर्न ऑल दिस, एंड दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी फॉर अ गेन टू कस्टमर।
आपने सब सीखा और तब आप कहेंगे कि ओ ये सब बातें हैं, एंड आई थिंक these are the areas which we will work so that and that will be beneficial to you customer. You have not given the solution. All you have done is you have identified the area, जगह, area, that the all the points, just say, are you spending the shifting the spending, and then so is a problem is identified. Okay, so now again, ग्राहक की आवाज सुने, बेचे नहीं, आप ग्राहक की समस्या को समझने के लिए। ये मैं बार बार आपको कहता हूं, क्योंकि ये हम लोग एंटरप्रेन्योर्स को ये जानना बहुत जरूरी है कि हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करें वो कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करें, और जैसी सॉल्यूशन कस्टमर चाहता है उसके मुताबिक करें, बनिस्बत कि हम लोग अपने दिमाग से सोचते हैं कि ओ इस प्रॉब्लम को सॉल्व ऐसे करना चाहिए। Yes, you give that idea, but take the input from the customer. Ki, is that what he wants? So, customer, जब सक्सेस क्राइटेरिया मापदंड कैसे नापता है कस्टमर? आपने उसको सॉल्यूशन दिया और कस्टमर ये कैसे सोचता है कि ओ दिस इज गुड एंड ये जो कैसे वो मापता है? तो तीन चीजें वो ध्यान देता है। एक तो फंक्शनल, कार्यात्मक, क्या जो प्रोडक्ट है जिस काम के लिए आया है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, एफिशिएंटली इज इट डूइंग द वर्क और नॉट, फंक्शनल। सोशल, इट इज इजी टू यूज, इट इज डूइंग इट्स वर्क, इट्स हेल्पिंग द सोसाइटी। एंड इमोशनल, बड़ा अच्छा लग रहा है कि कस्टमर आर नॉट कंप्लेनिंग एनी मोर, बहुत अच्छा, कस्टमर आर सेइंग अरे हमें ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आई हियर इज द मोर ऑर्डर फॉर दैट प्रोडक्ट, राइट? सो अंडरस्टैंड, ये आपको समझना जरूरी है कि इन तीनों में से, फंक्शनल, सोशल, इमोशनल, या कार्यात्मक, सामाजिक, भावनात्मक, ये तीनों चीजों में से ग्राहक के लिए कौन सा मापदंड सबसे अधिक मायने रखता है? दैट्स व्हाट यू हैव टू सी। कौन सा मानदंड जो है वो मायने रखता है? And that only you will understand when you talk to the customer. So let's come back to the basics. Startup versus corporation. क्या फर्क है? ये सब जो किया हम लोगों ने, we understood the customer requirement. Those 5 C's we understood. But what is this all about? Well, let's look at the startup versus corporation. So startup है, you have a startup. Startup has a bunch of hypotheses and is focused to create a new business model. आपकी स्टार्टअप है, आप स्टार्टअप में कई परिकल्पनाएं हैं, हाइपोथेसिस है, और उसी को आप प्रूव करते हैं और उससे नया बिजनेस मॉडल आप बनाते हैं। कॉरपोरेशन जो है, बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन है, उन्होंने पहले बिजनेस मॉडल बना दिया, पहले ही बना दिया, और उन्होंने पहले बना दिया है और उसी बिजनेस मॉडल को वो लोग इंप्लीमेंट करते हैं। सो कॉरपोरेशन एग्जिट्स अ नोन, कॉरपोरेशन एग्जीक्यूट्स ए नोन बिजनेस मॉडल। कॉरपोरेशन इज बड़ी कंपनी एक ज्ञात बिजनेस मॉडल को निष्पादित करती है, बिकॉज दे नो व्हाट इट इज, सो दे यूज दैट मॉडल ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन। तो क्या होता है कि सो द ऑल द इन्वेस्टमेंट इज इन दैट दैट पर्टिकुलर मॉडल, और अगर कोई नया आइडिया आता है, नई चीजें आती है, तो बड़ी कंपनी में उसको चेंज करना बहुत डिफिकल्टी है, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखिए, सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट में, सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट बहुत तेजी से चेंज हो रहा है ना, right? तो अगर आपने, और उसके जो सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट के जो जितने भी टूल्स हैं, इक्विपमेंट है, मशीनरी है, दे आर वेरी 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 एक्सपेंसिव। सो वंस यू हैव इट,
You really have to use it for longer period. एंड सो बड़ी, और ये बड़ी कंपनी ही मना करती है, तो बड़ी कंपनी दे इन्वेस्ट इन दिस सेमीकंडक्टर, और फिर उसके बाद दे स्टार्ट बिल्डिंग, एंड दे हैव टू, because now they have a setup already in the semiconductor, एक पर्टिकुलर टाइप का सेटअप है, so they cannot change from there. It is very difficult for them to change. तो सो स्टार्टअप कंपनी अपना नया आइडिया आया, नया इम्प्लीमेंटेशन किया, दे कैन स्टार्ट वे अहेड इन द मोर एडवांस प्रोडक्ट, दे कैन स्टार्ट वेरी इजीली, और इसीलिए स्टार्टअप कंपनी इतनी सक्सेस पाती है, बिकॉज दे डू ऑल द होमवर्क, and they're now they are ready to not only they have advanced innovation, but they have a better way of doing it. बिजनेस जो है, ऑर्गेनाइजेशन दैट क्रिएट्स, डिलीवर एंड कैप्चर्स वैल्यू। तो यू हैव अ बिजनेस, कोई पूछा अच्छा बिजनेस क्या करती है आपकी, ये ऐसा संगठन है जो मूल्य बनाता है, पहुंचाता है और प्राप्त करता है। सो क्रिएटिंग अ वैल्यू फॉर द कस्टमर यू आर डूइंग, एंड देन यू आर टेकिंग एडवांटेज फ्रॉम दी। और बिजनेस के चार मुख्य क्षेत्र हैं। एक तो है ग्राहक, राइट, ग्राहक तो होना ही चाहिए, ग्राहक ही नहीं होगा तो बिजनेस कभी नहीं होगा। You have to have a grahak, right? That's why we say find the need. What is the unmet need? When you find the unmet need, then you have a grahak, you have a customer, and then you offer the value proposition. Value proposition offer in the form of minimum viable product. And then you have an infrastructure, आपके पास बिल्डिंग आपने बना दी है, असेंबली एरिया बनाया है, टेस्ट लैब बनाई है, वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बना है। एंड देन फाइनेंशियल वायबिलिटी, कि आपको अगर आप एक्सपेंड कर रहे हैं, पैसे की आपको जरूरत है, सो यू हैव द सोर्स ऑफ फंड्स अवेलेबल। Either you have already raised the fund or you have gone to the banks, and बैंक से भी आपने लोन, लिमिटेड टाइम लोन में आपने उनसे ये फाइनेंस की फाइनेंशियल अरेंजमेंट कर रखा है, या यू कैन गो टू गेट सम ग्रांट्स आल्सो। सो बिजनेस मॉडल क्या करता है? बिजनेस मॉडल शोज कि आप कंपनी कैसे पैसा बनाएगी, कंपनी कैसे बनाएगी। बिजनेस मॉडल शो द लॉजिक ऑफ हाउ अ कंपनी इंटेंड्स टू मेक मनी, एंड इट इज अ ब्लूप्रिंट। वो खाता है, वो लिखा हुआ है, द प्रोसेस है, फ्लो चार्ट है उसमें, कि कैसे पैसा बनाएंगे, कैसे आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाएंगे, कैसे प्रोसेसेस क्या होंगे, कौन सा सिस्टम होगा। सो बिजनेस मॉडल उस तर्क को दर्शाता है कि कैसे एक कंपनी पैसा कमाने का इरादा रखती है, हाउ इट्स गोइंग टू मेक मनी। ये एक रणनीति का खाका है जिसे सब संगठनात्मक संरचनाओं, प्रक्रियाओं और प्रणालियों के माध्यम से लागू किया जाता है। ऑल दिस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, प्रोसेसेस एंड सिस्टम्स, that's how that's what the business model shows, कि हम कैसे बनाएंगे। और ये बोलता है आप पैसा कैसे कमाने की योजना, आप पैसे कैसे कमाएंगे। और ऑर्गेनाइजेशन स्कोर लॉजिक वही है ना, कि आपने हाइपोथेसिस अप्रूव किया, हाइपोथेसिस से व्हाट डिड यू प्रूव, कि ये परिकल्पना क्या प्रूव किया भाई, इससे हम कैसे, हाउ वी आर गोइंग टू मेक मनी, हाउ वी आर गोइंग टू मेक अ वैल्यू प्रोपोजिशन फॉर द कस्टमर, a set of planned argument and assumptions about how a startup will create value for its customer. तर्कों और मान्यताओं का एक समूह, कि कैसे एक स्टार्टअप अपने ग्राहकों और सभी हितधारकों के लिए मूल्य पैदा करेगा। हितधारी का कौन है वो लोग?
वो लोग हैं जो कि इन्वेस्टर हैं. They are the one. Customers are there. The founders, the co-founders, the senior employees, all of them are, those are all हितधारक. They are all part of it. तो उनके लिए कंपनी कैसे करेगी so that it can make money for everyone. So a decision and a process to transform a scientific or a technology idea or opportunity into market value. ये that was the business model is कि कोई भी टेक्नोलॉजी को कैसे अडॉप्ट करेंगे जिससे कि इट स्टार्ट्स क्रिएटिंग यू क्रिएट अ प्रोडक्ट एंड यू क्रिएट अ वैल्यू फॉर द कस्टमर. कैसे अब ड्रोन में कितनी टेक्नोलॉजी एक साथ आई. ड्रोन में कितनी टेक्नोलॉजी है. एरोस्पेस, aerodynamics, the metallurgy part of it, making sure it's lighter, the fan part, the speed, and the global positioning system, keeping track of where it is going, keeping the wireless communication. So many of the technologies, they kind of came together in a drone. तभी वो product बना. You can buy a drone for about $200, $300. You can buy a plain drone for like $50. Because all these technologies converged. And when the technology convergence happened, that's when the miracle happens. So next, now you have gone to the customer, you've identified, you understand what a startup is. So now what you do is you have to go through this product market fit process. कि आप क्या बनाएंगे, ऐसा कौन सा उस प्रोडक्ट को कैसे बनाएंगे ताकि मार्केट फिट हो जाए. मार्केट फिट का मतलब हुआ कि मार्केट में उसकी डिमांड है. देयर आर कस्टमर्स हु वांट टू बाय दैट प्रोडक्ट. सो यू हैव अ प्रोडक्ट and there's a group of customer market segment जो कि who buy the product, who like your product, and that is called product market fit. आपका प्रोडक्ट है और कस्टमर है who wants to buy that product. Product market fit. So product development कैसे होता है? We talked about you have a customer unmet need, right? आपने किया, you did your survey, and you say, okay, you met lot of customers and you found out कि कौन सी unmet need है. And then you found out more people कि वही unmet need और किस किस की है. And once you have done that, and once you have all the inputs from all those people, just like Aditya, yeah, Aditya was he started his business in the solar installation, and he found out what is the customer unmet need, and he found out कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े इंस्टॉलर जो थे सोलर वाले, they were doing only the big one they are doing. 50 kilowatts say higher. Or not only that, when they did from the lower scale, 50 या 25 kilowatt का लगाए, then they would not be able to serve them. So no service was provided. So Aditya found out, discovered, oh, there's an unmet need. Unmet need, number one, maintenance of the low power this energy sources, which are less than 50 kilowatt hour. That, and then installation for the smaller power generators in the solar area. So he found that and he started doing it. So customer unmet need, and then he gave a proposed solution, and he built the MVP. He built some samples, and then he gave them to the customer. So that's how he got into he got into that. So let us go and talk each one of these four items, which is customer discovery,
customer validation, customer acquisition, and company building. How do we do that? Main thing, product market fit. You have to go through the customer unmet need. You have to find out, identify it. You got to come up with a proposed solution. And then you got to build a MVP, minimum viable product. You got to build that. So first, customer discovery. You found the customer need, and it's who has that need. किस किस की है आपने, you find that out. And once you find that those customers, then you kind of you have a hypothesis, and you are trying to prove your hypothesis by constantly keeping talking to the customer. And as I said earlier, we talked about it. We don't want to sell. Not in the at this stage. We are listening to the customer. Customer की problem क्या है वो हम लोग सुन रहे हैं. So customer now what and this loop from this loop of customer discovery to customer validation, and then we come back here again. We again do that because we want to make sure all our hypotheses जो है हम लोग ने prove वो कर दिए. Once this is happened, once customer discovery, you are happy with the customer discovery, that means you have defined the need, you have defined the some of the customers who have the same need. And so now you go to the next subject, next round, which is the customer validation. So now you say, okay, which customer segment I'm going to work with, because you have part of that. You already identify that. So you go to that customer and you come up with a solution. उस समय आप solution MVP, minimum viable product you want to do. So you want to make sure that it is repeatable and scalable. Very important. You got to do it. कि आप ऐसा product, ऐसा solution बनाएं जो कि repeatable है and which is scalable. And so now you keep on doing that and keep on doing that, and you keep on pivoting, going back here, looping back to the customer discovery, making sure that you have completed your homework. वो बोलते हैं ना, you have dotted all the I's and crossed all the T's. So now you have a customer validation. See this stop sign? You got to this. This stop sign बहुत जरूरी है. हर एक्शन में इस ब्लॉब, इस सर्कल से दूसरे सर्कल में तभी जाएंगे पूर्ण रूप से जब ये all the condition which you have identified, all the condition you have met. And then now after customer validation, now you are going to go to the next circle, which is the customer acquisition. Customer acquisition. You just think about what does customer acquisition means. Customer acquisition का मतलब हुआ कि customer is happy. You have presented the solution to the customer. Customer is happy. You have presented to customer the minimum viable product. Once you have presented the minimum viable product to the customer and customer looks at it, customer is happy. Now, it may happen that you are doing the customer validation. You took it to the customer, and some circumstances changes, and whatever you produce, really that is not applicable anymore. And look at Aditya's case. Perfect example here. That he was making this installing the solar panels at different places and doing well, and then he realizes, my God, the competition has grown up so much in that his margin, which was higher, now her margin has reduced to less than 20%. And less than 20% is not a margin which will keep you in business. So he looked at that, and then he said, I need to pivot. I need to change. And what he did, he again went to the customer discovery. He went to 1,500 farmers, looked at their needs, noted down what their requirements are,
which are the unmet need there. And then he interviewed them, he talked to them, took their survey, and then he came up, his company added another product line, which is the solar appliances, solar dryer, solar distiller, and tiller, and all of that. He started doing that. So he pivoted. That's the term he did. He pivoted from just a single product, single service area, which was the installation of the solar panel, to solar appliances. Whatever he gained from the solar panel installation, the experience which he gained, the performance, he used all that experience in the next, converting that to a product. So now you have the customer, you have satisfied customer, you have acquired the customer. And what does that mean? That means you gave the minimum viable product to customer. Customer is very happy. And now customer is ready to give you either MOU or give you a purchase order. When customer does that, as soon as you have that, then you have something which is equity in the company. So you have the product, you have the customer who wants that product, the price is already agreed upon, and all you need now is that you need to invest in the company so that you can build that product, so that you can fulfill that purchase order or MOU which you received from the customer. So at this time, you can go, now you have certain value. So you determine, okay, my value of my company is this much. So if I just, for example, if I say, okay, Aditya did it, and so his value of the company right now is, just for example, just take a number, is 2 crores. And he needs 50 lakhs. He needs 50 lakhs rupees to invest to increase the production, to put these solar appliances into the production. He needs that. And also he needs some money for to do the marketing or expansion. So he needs that 50 lakhs. So he will go out and he will say, okay, my company is worth 2 crores and I want 50 lakhs. So I will give you 25% of my share. I'll sell you for 50 lakhs. And so the investor gives 50 lakhs, acquires 25% of the equity of the company. Now look at that. The company value was 2 crores before he took the money. Now he got 50 lakhs. So all of a sudden, the company's value became 2 crore 50 lakh. That's what is called the company building. That's how you build the company. So you have raised the money, you have raised the fund, you have gone through all the pivoting, you have satisfied all the blocks: customer discovery, customer validation, customer acquisition, and company building. And you have a validated MVP with the customer. And you are now ready to go. And you got, with that, you also raise money. So now you have money in the bank, and now you can go to the investor has put in 50 lakhs. So you can start working on it. Now, if you want more money, you can go to the bank, get a short-term loan. You can do that. Okay. And that depends on advisor. How do you, your advisor investor, they will guide you what has to be done. But you have a company now, you have started the process of company building. Okay. So coming back, I want to come back to the business model canvas, BMC, because it's all about BMC.
And all of you students, you have to complete as a team. You have to complete this PMC because you will be given marks for this. Okay. So first thing is value proposition. Value proposition, identify the customer problem. That's what it is. At value proposition, you first identify the customer problem. You know, and once you have created a customer problem, now you create the value with solution. So that's called value proposition. That's what you will do. And from there, since you have done the customer problem idea, you have identified, and you have also gone to the customers who have similar problem. So now what you have done is you have now a customer segment. आपने identify कर दिया ये segment है, and you start you start fulfilling that segment's requirement. That's what you want to do. And then the channel. Now you have a MVP, minimum viable product आपने बनाया है, and customer wants that product. So how will you get that delivered to the customer? वो प्रोडक्ट कैसे जाएगा? How the customer will know उस प्रोडक्ट को यूज कैसे करना है? The communication. How will that happen? How will customer, if customer likes the product, want to place order, how that will be done? If customer has a problem with the product, how the customer support is going to help out? These are all the channel questions which have to be addressed. And the customer relationship, that's how you build, how well you serve the customer, and so how well you communicate with the customer. Never leave customer in the dark. हमेशा पारदर्शिता customer के साथ रहनी चाहिए. Yeah. And so now, after customer relationship, let's go to the next one, which is the key resources. आप कंपनी बना रहे हैं, आपको क्या चीज की जरूरत है? कौन से की रिसोर्स चाहिए? आपको क्या बिल्डिंग चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, टूल चाहिए, क्या चाहिए आपको? यू नीड टू डिफाइन दैट, एंड हाउ मच इट इज गोइंग टू कॉस्ट टू यू. यू डिफाइन दैट. दूसरा, आपको ह्यूमन रिसोर्सेज, आपको कितने लोग, यू नीड द मैनेजर्स, यू नीड द इंजीनियर्स, यू नीड द टेक्नीशियंस, ऑल ऑफ दैट. यू नीड द सेल्स पर्सन. क्या क्या जरूरी है, क्या क्या चाहिए आपको? You need to identify that. And then financial. आपको इस जो भी आपने आइडेंटिफाई किया है अपने बिजनेस प्लान के मुताबिक, तो जो खर्च हो रहा है वो फाइनेंशियल कहाँ से आएगा? वेयर विल दैट फाइनेंस का? हाउ यू आर गोइंग टू अरेंज फॉर दैट फाइनेंस? आर यू गोइंग टू डू द फंड रेजिंग जस्ट लाइक वी डिड फॉर द इक्विटी, or you're going to take a loan from the bank, short-term loan, or you're going to get a grant from the government or somebody else. You need to define that. So what are the resources and how you're going to get it? Intellectual property. Now, suppose you are using a patent which belongs to somebody else. So you came up with an idea, and you are building your product, and all of a sudden you get a letter, oh, sorry, startup, this is a patent, whatever you're using, it is our patent. So you have to pay for that, right? That's an expense you have to bear. Then next is the key partnership. These are the entities with common interest. So these are the companies, manufacturing companies who make the product. Outsource जो कहते हैं ना, outsource, those kind of companies. And so they have the common interest, they want the common interest, and they want to participate in achieving the goals. तो दोनों का इंटरेस्ट है. अब टेक फॉर एग्जाम्पल मारुति कंपनी है, गाड़ी बनाती है, कार बनाती है, लेकिन कार बनाने के लिए उसको टायर की जरूरत है. अब मारुति टायर नहीं बनाती है, तो जो की पार्टनर हुए वो टायर कंपनी हुई उनकी की पार्टनर, right? The car company key partner. So that's how you create that kind of a key partners are there. And then key activities.
अगर आपकी की एक्टिविटीज जो है वो कौन कौन सी आपके जो प्रोग्राम में, आपके जो बिजनेस मॉडल जो जो आपने बनाया है, परिकल्पनाएं जो की हैं, और जो प्रॉफिटेबल, रिपीटेबल, स्केलेबल, प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल बनाया है, उसको करने के लिए आपको क्या क्या करने की जरूरत है, सारी एक्टिविटीज आपको वहां वो एक साथ लिखनी पड़ेगी कहीं पर. यू हैव टू आइडेंटिफाई. So when you go and make a presentation for the funding, you have that data. Let's go to the cost structure. Cost structure. वो cost structure जो है, how much money you are spending. Fixed and variable cost दोनों होने चाहिए. Unit cost क्या है? Unit economy cost. अगर जैसे अगर आप अगर 10 यूनिट बना रहे हैं तो एक कॉस्ट आती है, पर यूनिट की एक कॉस्ट होगी. 100 यूनिट बनाते हैं तो अ, तो एक यूनिट की कॉस्ट और कम हो जाएगी, क्योंकि आप ज्यादा वॉल्यूम में बना रहे हैं. सो यूनिट कॉस्ट क्या है, यू हैव टू लुक एट दैट वेरी केयरफुल, वेरी यू हैव टू लुक एट इट वेरी वेरी केयरफुली. लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ अ कस्टमर. लाइफ टाइम लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ कस्टमर क्या है? बेस्ड ऑन दैट कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कितनी है, कि आप एक कस्टमर को जब एक्वायर करते हैं, एक कस्टमर को साइन अप करते हैं, तो उसके पहले आपने, यू हैव गॉन टू द कस्टमर, आप लोग सेल्स पर्सन और टेक्निकल पर्सन जाके उससे बात की है. ऑल दोज आर एक्सपेंसेस. यू मेड अ प्रोटोटाइप. ऑल दोज आर एक्सपेंसेस, राइट? सो ये सारे खर्च जो है ये कॉस्ट स्ट्रक्चर में आते हैं. और लास्ट में है रेवेन्यू स्ट्रीम. रेवेन्यू स्ट्रीम विच इज कि क्या पैसा आपका कहां से आ रहा है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू कहां कहां से आ रहा है. या तो दो सोर्स होते हैं, या तो आपका है कि प्रोडक्ट है, सो यू आर मेकिंग अ प्रोडक्ट, यू मेक अ प्रोडक्ट एंड यू सेल दैट प्रोडक्ट, इट्स कॉल्ड एसेट सेल. तो आपने अपना प्रोडक्ट बेच दिया, आपने वो पैसा लिया ना. दूसरा है कि रिकरिंग रेवेन्यू उसको बोलते हैं. पहला हुआ वन टाइम सेल, लेकिन ये दूसरा वाला जो वो रिकरिंग रेवेन्यू. रिकरिंग रेवेन्यू, आप ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोग्राम लेते हैं, तो या कोई सो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोग्राम लिए, हर साल आपको पे करना पड़ता है लाइसेंस फी. यू हैव टू पे द लाइसेंस फी, एंड दैट इज अ रिकरिंग रेवेन्यू. That's what it is called. So you have asset sale, you can do that, or you can have a recurring revenue. That's what you get all the main source of revenue. And then as the company grows, you have the other source also. So we started with the 5 C's, and we went through all the sequence. We started with the 5 C, which is circumstances, परिस्थितियां, कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ कौन सा है, कंस्ट्रेन, क्या क्या बाधाएं और सीमाएं हैं, कंपनसेटिंग बिहेवियर, क्षतिपूर्ति व्यवहार कैसे कर रहे हैं, व्हाट इज दैट, एंड मापदंड, क्राइटेरिया क्या है. we go to that, and then after that we talked about company, startup versus corporation, business क्या है, we talked about that. Business model, how do you plan to make money? That's what that business model is. We talked about that. And then we talked about product market fit, MVP. कैसे वो बनाते हैं, 4 बड़े सर्कल: कस्टमर डिस्कवरी, कस्टमर वैलिडेशन, कस्टमर एक्विजिशन, एंड कंपनी बिल्डिंग. Once we do that, we go through all 4 of them, and we pivot if required to be. We pivot. ये स्टॉप साइन जितने भी है वहां हम रुकते हैं. वी मेक श्योर कि बिफोर वी गो फ्रॉम कस्टमर डिस्कवरी टू कस्टमर वैलिडेशन, all the problems which were there, we have addressed all the issues. If you have addressed all the issues, then you move
and go to the customer validation. Customer validation is a customer acquisition. Again, same thing, you test. You make sure that you have addressed all the issues, all the barriers you have removed. And then at the end, in the last, you go from customer acquisition to the customer building, where now you have the funds to grow your company. BMC we talked about, all the 9 blocks of the BMC, very important. इसको जान लीजिए, याद मत कीजिए, लेकिन समझ जाइए हर ब्लॉक कौन सा है. That will help you out. Thank you so much. And now you will be getting this video very soon, and you can watch it on the. I'll be sharing the link with you. Thank you so much for giving me opportunity to share 5 C's with you, and uh, I hope to meet you again in next class. Thank you. Thank you so much.